Dhammang namassami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Handmayam Buddhasya Bhagavato Pubbavad Namkaram Karumasi. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handmayam Buddhanusatinayam Karumasi. Tamko Bhagavantang evam kalyanu iti saddo abhugato iti piso bhagava arhang samma sambuddho vijjacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasara satta deva manussan buddho bhagavati. Handmayam Buddha Vigitim Karumasi. Buddha Varahanta Varatadi Guna Viyuto Yota Vijnana Karuna Hi Samagatato Bodhesiyo Sujanata Kamalang Vasuro Vandamitam Arya Tam Arang Tam Are Tam Mandamiham Tamaranam Tamaranam Sirsajinendam Buddho Yo Sabbapaninam Saranam Kemamuttamam Pathamanusatittanam Vandamitam Sirenam Buddhasasmidaso Buddho me sami kissaro Buddhasaham niyademi sariram jeevitam chidam Vandantoham charisami Buddhaseva subodhitam Nati me saranam anyam Buddho me saranam varam Etena sajja vajjena Vajjeyam sattu sasane Buddhang me vandamanena Yam punyam pasutam eda Sabbe piyantarayami Mahesum tassa tejasa Vajina vajya vajitsa Buddhe kupamam pakadam Buddho padiganato chantam Karantare samvaritam buddhe. Handmayam Dhammanusatinayam Karumasi. Swakhato Bhagavata Dhammo Sandetiko Akaliko Ehipasiko Panaiko Pachattang Veditabba Vinyohi. Handmayam Dhamma Vigitim Karumasi. Swakhatadi Guna Yoga Vasena Seyo Yo Magga Paka Pariyatti Vimokha Vido Dhammo Kuloka Patana Tadadhari Dhari
वन्दाम्यहं परधम्ममेतं धम्मो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं द्वितीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेण धम्मस्सस्मि दासो धम्मो मे सामिकेस्सरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्यैव सुधम्मतं नास्ति मे शरणं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं यदा सर्वेऽपि सन्तरायामि माहेषु तस्य तेजसा कायेन वाचा मनसा धम्मे को कम्मं भक्तमे धम्मो पठिकनाथच कालंतरे संवर्तम धम्मे आनंदमयं संघानुसतिनयं करोमसि पन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यमीच पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगा अट्ठ पुरुष पुंगला एष भगवतो सावक संगो आहुनेयो आहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाति आनंदमयं संघाभिगीतिं करोमसि सधम्मजो सुपटिपत्ति गुणादियुतो यो अट्ठविधो अरिय पुंगल संगसिद्धो शीलादि धम्म पवरा सयकाय सिद्धो वन्दामहं तमरिय गणं सुशुद्धं संगो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं तत्यानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेण संघस्सस्मि दासो संगो मे सामिकीसरो संघस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि संघस्सोपटिपन्नतं नास्ति मे शरणम् अन्यत् संगो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जे वड्डेयं सत्तु शासने संगं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं यदा सर्वेऽपि अन्तरायामि माहेषु तस्य तेजसा कायेन वाचा मनसा संघे कुकम्मं भक्तम् संगो पठिकनाथच कालंतरे संवर्तम संघे। आज हम अनुत्तर लक्षण सूत्र का हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। आदित्य पर्याय सूत्र का हिंदी में पढ़ेंगे।
पेज 117 आदित्य पर्याय सूत्र शिक्षणीय को संयत करने में दक्ष, सभी गतियों से परे, अमोघ वचन बोलने वाले, विशिष्ट ज्ञान सिखाने वाले, लोगों को धम्म और विनय की उपयुक्त एवं अनुकूल शिक्षा देने वाले बुद्ध ने अग्नि की परिचर्या करने वाले अति उत्तम योगियों को अग्नि की उत्तम उपमा द्वारा मनोहर शिक्षा प्रदान की। उन बुद्धिमान इच्छुक श्रोताओं को उपयुक्त परीक्षण द्वारा श्रोताओं को परम मुक्ति दिलवाने वाले तथा दुखों के लक्षणों का विवरण देने वाले इस सूत्र का आए हम पाठ करें। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान गया में गयाशीष के समीप सहस्त्र भिक्षुओं के साथ विहार कर रहे थे। वहां भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं, सब जल रहा है। और क्या है वह सब जो जल रहा है? भिक्षुओं, चक्षु जल रहा है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्पर्श जल रहा है, और चक्षु संस्पर्श से उपजने वाली वेदना सुखद हो, दुखद हो अथवा असुखद अदुखद, वह भी जल रही है। किस कारण जल रही हैं? जल रही हैं रागाग्नि से, दोषाग्नि से, मोहाग्नि से, जन्म, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, शारीरिक एवं मानसिक दुख और निराशा से। भिक्षुओं, कर्ण शोध जल रहा है, शब्द ध्वनि जल रहा है, कर्ण विज्ञान जल रहा है, कर्ण संस्पर्श जल रहा है, और कर्ण संस्पर्श से उपजने वाली वेदना सुखद हो, दुखद हो अथवा असुखद अदुखद, वह भी जल रही है। किस कारण जल रही है? जल रही हैं रागाग्नि से, दोषाग्नि से, मोहाग्नि से, जन्म, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, शारीरिक और मानसिक दुख और निराशा से। भिक्षुओं, नासिका जल रही है, गंध जल रही है, नासिका विज्ञान जल रहा है, नासिका संस्पर्श जल रहा है, और नासिका संस्पर्श से उपजने वाली वेदना सुखद हो, दुखद हो अथवा असुखद अदुखद, वह भी जल रही है। किस कारण जल रही हैं? जल रही हैं रागाग्नि से, दोषाग्नि से, मोहाग्नि से, जन्म, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, शारीरिक और मानसिक दुख और निराशा से। भिक्षुओं, जिह्वा जल रही है, रस जल रहा है, जिह्वा विज्ञान जल रहा है, जिह्वा संस्पर्श जल रहा है, और जिह्वा संस्पर्श से उपजने वाली वेदना सुखद हो, दुखद हो अथवा असुखद अदुखद, वह भी जल रही है। किस कारण जल रही हैं? जल रही हैं रागाग्नि से, दोषाग्नि से, मोहाग्नि से, जन्म, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, शारीरिक एवं मानसिक दुख और निराशा से। भिक्षुओं, काया जल रही है, स्पर्श का विषय जल रहा है, काया विज्ञान जल रहा है,
काया संस्पर्श जल रहा है और काया संस्पर्श से उपजने वाली वेदना सुखद हो, दुखद हो अथवा असुखद अदुखद, वह भी जल रही है। किस कारण जल रही है? जल रही हैं रागाग्नि से, दोषाग्नि से, मोहाग्नि से, जन्म, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, शारीरिक और मानसिक दुख और निराशा से। भिक्षुओं, मन जल रहा है, धम्म विचार जल रहा है, मनोविज्ञान जल रहा है, मनो संस्पर्श जल रहा है और मनो संस्पर्श से उपजने वाली वेदना सुखद हो, दुखद हो अथवा असुखद अदुखद, वह भी जल रही है। किस कारण जल रही है? जल रही है रागाग्नि से, दोषाग्नि से, मोहाग्नि से। जरा, मरण, शोक, जन्म, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, शारीरिक और मानसिक दुख और निराशा से। ऐसा देखकर भिक्षु श्रुतवान आर्य श्रावक का चक्षु से मोह भंग हो जाता है, रूप से मोह भंग हो जाता है, चक्षु विज्ञान से मोह भंग हो जाता है, चक्षु संस्पर्श से मोह भंग हो जाता है और चक्षु संस्पर्श से उपजने वाली वेदना सुखद हो, दुखद हो अथवा असुखद अदुखद, उससे भी मोह भंग हो जाता है। कर्ण, श्रोत्र से मोह भंग हो जाता है, शब्द ध्वनि से मोह भंग हो जाता है, कर्ण विज्ञान से मोह भंग हो जाता है, कर्ण संस्पर्श से मोह भंग हो जाता है और कर्ण संस्पर्श से उपजने वाली वेदना सुखद हो, दुखद हो अथवा असुखद अदुखद, उससे भी मोह भंग हो जाता है। नासिका से मुंह भंग हो जाता है, गंध से मुंह भंग हो जाता है, नासिका विज्ञान से मुंह भंग हो जाता है, नासिका संस्पर्श से मुंह भंग हो जाता है और नासिका संस्पर्श से उपजने वाली वेदना सुखद हो, दुखद हो अथवा असुखद अदुखद, उससे भी मोह भंग हो जाता है। जिह्वा से मोह भंग हो जाता है, रस से मोह भंग हो जाता है, जिह्वा विज्ञान से मोह भंग हो जाता है, जिह्वा संस्पर्श से मोह भंग हो जाता है और जिह्वा संस्पर्श से उपजने वाली वेदना सुखद हो, दुखद हो अथवा असुखद अदुखद, उससे भी मोह भंग हो जाता है। काया से मोह भंग हो जाता है, स्पर्श के विषय से मोह भंग हो जाता है, काया विज्ञान से मोह भंग हो जाता है, काया संस्पर्श से मोह भंग हो जाता है और काया संस्पर्श से उपजने वाली वेदना सुखद हो, दुखद हो अथवा असुखद अदुखद, उससे भी मोह भंग हो जाता है। मन से मोह भंग हो जाता है, विचार से मोह भंग हो जाता है, मनोविज्ञान से मोह भंग हो जाता है, मनो संस्पर्श से मोह भंग हो जाता है और मनो संस्पर्श से उपजने वाली वेदना सुखद हो, दुखद हो अथवा असुखद अदुखद, उससे भी मोह भंग हो जाता है। मोह भंग के कारण विरक्त हो जाता है, विरक्ति से चित्त विमुक्त हो जाता है तथा विमुक्त चित्त यह जान जाता है मुक्ति हो गई है और पुनर्जन्म समाप्त हो गई है। ब्रह्मचर्य पूर्ण हुआ, करणीय कर लिया, अब और किसी अवस्था में आना नहीं होगा। भगवान ने ऐसा कहा। भिक्षुओं ने प्रसन्न होकर भगवान के प्रवचन का अभिनंदन किया। जब यह प्रवचन दिया जा रहा था, सहस्त्र भिक्षुओं के मानस आसक्ति रहित हो, आसव मुक्त हो गए। आदित्य पर्याय सूत्र। Thank you.
मैं तो शर्मा थोड़ी थोड़ी हाँ अभी उन्हें खत्म हो चुका है टॉक We'll now listen to the Desna by Yancha. It's titled The Fountain of Wisdom. This is the 50th book in the collection, and here this is entitled The Fountain of Wisdom. And this was originally published in Food for the Heart, and it was given to the Assembly monks after the recitation of the Patimokkha, the monastic rule, at Wat Pah Pong during the Rains Retreat in 1978. And this was published before in Food for the Heart. This was given the title Sense Contact, the Fount of Wisdom. The Fountain of Wisdom. All of us have made up our minds to become bhikkhus and samaneras in the Buddhist dispensation in order to find peace. Now, what is true peace? True peace, the Buddha said, is not very far away. It lies right here within us, but we tend to continually overlook it. People have their ideas about finding peace, but still tend to experience confusion and agitation. They still tend to be unsure and haven't yet found fulfillment in their practice. They haven't yet reached the goal. It's as if we've left our home to travel to many different places. Whether we get into a car or on board a boat, no matter where we go, we still haven't reached our home. As long as we still haven't reached home, we don't feel content. We still have some unfinished business to take care of. This is because our journey is not yet finished. We haven't reached our destination. We travel all over the place in search of liberation. All of you bhikkhus and samaneras here want peace, every one of you. Even myself, when I was younger, searched all over for peace. Wherever I went, I couldn't be satisfied. Going into forests or visiting various teachers, listening to Dhamma talks, I could find no satisfaction. Why is this? We look for peace in peaceful places, where there won't be sights or sounds or odors or flavors, thinking that living quietly like this is the way to find contentment, that herein lies peace. But actually, if we live very quietly in places where nothing arises, can wisdom arise? Would we be aware of anything? Think about it. If our eyes don't see sights, what would they be like? If the nose didn't experience smells, what would that be like? If the tongue didn't experience flavors, what would that be like? If the body didn't experience feelings at all, what would that be like? To be like that would be like being blind and deaf, one whose nose and tongue had fallen off and who was completely numb with paralysis. Would there be anything there? And yet, people tend to think that if they went somewhere where nothing happened, they would find peace. Well, I thought like that myself. I once thought that way. When I was a young monk just starting to practice, I'd sit in meditation and sounds would disturb me. I'd think to myself, what can I do to make my mind peaceful? So I took some beeswax and stuffed my ears with it so that I couldn't hear anything. All that remained was a humming sound. I thought that would be peaceful, but no, all that thinking and confusion didn't arise in the ears after all. It arose in the mind. That is the place to search for peace. To put it another way, no matter where you go to stay, you don't want to do anything because it interferes with your practice. You don't want to sweep the grounds or do any work. You just want to be still and find peace that way. The teacher asks you to help out with the chores or any of the daily duties, but you don't put your heart into it because you feel it's only an external concern. I've often brought up the example of one of my disciples who was really eager to let go and find peace. I taught about letting go, and he accordingly understood that to let go of everything would indeed be peaceful. Actually, right from the day he'd come to stay here, he didn't want to do anything. Even when the wind blew half the roof off his kuti, he wasn't interested. He said that that was just an external thing, so he didn't bother fixing it up. When the sunlight and rain streamed in from one side, he'd move over to the other side. That wasn't any business of his. His business was to make his mind peaceful. That other stuff was a distraction. He wouldn't get involved. That was how he saw it.
One day I was walking past and I saw the collapsed roof. Hey, whose kuti is this? Someone told me whose it was, and I thought, strange. So I had a talk with him, explaining many things, such as the duties in regard to our dwellings, the senasana vata. We must have a dwelling place, and we must look after it. Letting go isn't like this. It doesn't mean shirking our responsibilities. That's the action of a fool. The rain comes in on one side, and you move over to the other side. Then the sunshine comes out, and you move back to that side. Why is that? Why don't you bother to let go there? I gave him a long discourse on this. Then when I finished, he said, "Oh, Lumpur, sometimes you teach me to cling, and sometimes you teach me to let go. I don't know what you want me to do. Even when my roof collapses and I let go to this extent, still you say it's not right. And yet you teach me to let go. I don't know what more you can expect of me." You see, people are like this. They can be as stupid as this. Are there visual objects within the eye? If there are no external visual objects, would our eyes see anything? Are there sounds within our ears if external sounds don't make contact? If there are no smells outside, would we experience them? Where are the causes? Think about what the Buddha said. All dhammas arise because of causes. If we didn't have ears, would we experience sounds? If we had no eyes, would we be able to see sights? Eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, these are the causes. It's said that all dhammas arise because of conditions. When they cease, it's because the causal conditions have ceased. For resulting conditions to arise, the causal conditions must arise first. If we think that peace lies where there are no sensations, would wisdom arise? Would there be causal and resultant conditions? Would we have anything to practice with? If we blame the sounds, then where are the sounds? If we blame the sounds, then where there are sounds, we can't be peaceful. We think that place is no good. Wherever there are sights, we say that's not peaceful. If that's the case, then to find peace, we'd have to be one whose senses have all died, blind and deaf. I thought about this. This is strange. Suffering arises because of eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. So, should we be blind? If we didn't see anything at all, maybe that would be better. One would have no defilements arising if one were blind or deaf. Is this the way it is? But thinking about it, it was all wrong. If that was the case, then blind and deaf people would be enlightened. They would all be accomplished if defilements arose of the eyes and the ears. There are the causal conditions. Where things arise at the cause, that's where we must stop them. Where the cause arises, that's where we must contemplate. Actually, the sense bases of the eye, ear, nose, tongue, body, and mind are all things which can facilitate the arising of wisdom, if we know them as they are. If we don't really know them, we must deny them, saying we don't want to see sights, hear sounds, and so on, because they disturb us. If we cut off the causal conditions, what are we going to contemplate? Think about it. Where would there be any cause and effect? This is wrong thinking on our part. This is why we are taught to be restrained. Restraint is sila. There is the sila of sense restraint. Eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. These are our sila, and they are our samadhi. Reflect on the story of Sariputta. At the time before he became a bhikkhu, he saw Assaji going on alms round. Seeing him, Sariputta thought, "This monk is most unusual. He walks neither too fast nor too slow. His robes are neatly worn. His bearing is restrained." Sariputta was inspired by him and so approached Venerable Assaji, paid his respects and asked him, "Excuse me, sir, who are you?" "I am a samana." "Who is your teacher?" "Venerable Gotama is my teacher." "What does Venerable Gotama teach?" "He teaches that all things arise because of conditions. When they cease, it's because the causal conditions have ceased." When asked about the Dhamma by Sariputta, Assaji explained only in brief. He talked about cause and effect. Dhammas arise because of causes. The cause arises first and then the result. When the result is to cease, the cause must first cease. That's all he said, but it was enough for Sariputta. At the time, Venerable Sariputta had his first insight into Dhamma, attaining stream entry at this point. Now this was a cause for the arising of Dhamma. At that time, Sariputta had eyes, he had ears, he had a nose, a tongue, a body, and a mind. All his faculties were intact.
If he didn't have his faculties, would there have been sufficient causes for wisdom to arise for him? Would he have been aware of anything? But most of us are afraid of contact. Either that, or we like to have contact, but we develop no wisdom from it. Instead, we repeatedly indulge through the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, delighting in and getting lost in sense objects. This is how it is. These sense bases can entice us into delight and indulgence, or they can lead us to knowledge and wisdom. They have both harm and benefit, depending on our wisdom. Now let us understand that, having gone forth and having come here to practice, we should take everything as practice, even the bad things. We should know them all. Why? So that we may know the truth. When we talk of practice, we don't simply mean those things that are good and pleasing to us. That's not how it is. In this world, some things are to our liking, some are not. These things all exist in this world, nowhere else. Usually, whatever we like, we want. Even regarding fellow monks and novices, whatever monk or novice we don't like, we don't want to associate with. We only want to be with the ones we like. You see? This is choosing according to our likes. Whatever we don't like, we don't want to see or know about. Actually, the Buddha wanted us to experience these things. Loko idu. Look at this world and know it clearly. If we don't know the truth of the world clearly, then we can't go anywhere. Living in the world, we must understand the world. The noble ones of the past, including the Buddha, all lived with these things. They lived in this world, among deluded people. They attained the truth right in this very world, nowhere else. They didn't run off to some other world to find the truth. They had wisdom. They restrained their senses, but the practice is to look into all these things and know them as they are. Therefore, the Buddha taught us to know the sense bases, our points of contact. The eye contacts forms and sends them in to become sights. The ears make contact with sounds. The nose makes contact with odors. The tongue makes contact with tastes. The body makes contact with tactile sensations. And so awareness arises. Where awareness arises is where we should look and see things as they are. If we don't know these things as they really are, we will either fall in love with them or hate them. Where these sensations arise is where we can become enlightened, where wisdom can arise. But sometimes we don't want things to be like that. The Buddha taught restraint, but restraint doesn't mean we don't see anything, hear anything, smell, taste, feel, or think anything. That's not what it means. If practitioners don't understand this, then as soon as they see or hear anything, they cower and run away. They don't deal with things. They run away, thinking that by so doing, those things will eventually lose their power over them, that they will eventually transcend them. But they won't. They won't transcend anything like that. If they run away not knowing the truth of them, later on the same stuff will pop up to be dealt with again. For example, those practitioners who are never content, be they in monasteries, forests, or mountains, wander on Dhutanga pilgrimage, go on Tudong, looking at this, that, and the other, thinking they'll find contentment that way. They go, and then they come back. They didn't see anything. They try going to a mountaintop. Ah, this is the spot. Now I'm right. They feel at peace for a few days and then get tired of it. Oh well, off to the seaside. Ah, here it's nice and cool. This will do me fine. After a while, they get tired of the seaside as well. Tired of the forests, tired of the mountains, tired of the seaside, tired of everything. This is not being tired of things in the right sense, that is with nibbida, disinterest in the lures of the sensual world. This is not right view. It's simply boredom, a kind of wrong view. Their view is not in accordance with the way things are. When they get back to the monastery, now, what will I do? I've been all over and come back with nothing. So they throw away their bowls and disrobe. Why do they disrobe? Because they haven't got the grip on the practice. They don't see anything. They go to the north and don't see anything. They go to the seaside, to the mountains, into the forests, and still don't see anything. So it's all finished. They die. This is how it goes. It's because they're continually running away from things. Wisdom doesn't arise. Now take another example. Suppose there is one monk who determines to stay with things and not run away. He looks after himself. He knows himself and he also knows those who come to stay with him. He's continually dealing with problems. Take the abbot, for example. If one is an abbot of a monastery, there are continual problems to deal with. There's a constant stream of things that demand attention. Why so?
Because people are always asking questions. The questions never end, so you must be constantly on the alert. You're constantly solving problems, your own as well as other people's. You must be constantly awake. Before you can doze off, they wake you up again with another problem. So this causes you to contemplate and understand things. You become skillful. Skillful in regard to yourself and skillful in regard to others. Skillful in many, many ways. This skill arises from contact, from confronting and dealing with things, from not running away. We don't run away physically, but we run away in mind, using our wisdom. We understand with wisdom right here. We don't run away from anything. This is a source of wisdom. One must work, must associate with other things. For instance, living in a big monastery like this, we must all help out to look after the things here. Looking at it in one way, you could say that it's all defilement. Living with lots of monks and novices, with many lay people coming and going, many defilements may arise. Yes, I admit. But we must live like this for the development of wisdom and the abandonment of foolishness. Which way are we to go? Are we going to go and live in order to get rid of foolishness or to increase our foolishness? We must contemplate. Whenever our eyes, ears, nose, tongue, body or mind make contact, we should be collected and circumspect. When suffering arises, we should ask, who is suffering? Why did this suffering arise? The abbot of a monastery has to supervise many disciples. Now, that may be suffering. There's no suffering. If we are afraid of suffering and don't want to face it, where are we going to do battle with it? If suffering arises and we don't know it, how are we going to deal with it? This is of utmost importance. We must know suffering. Escaping from suffering means knowing the way out of suffering. It doesn't mean running away from wherever suffering arises. By doing that, you just carry your suffering with you. When suffering arises again somewhere else, you'll have to run away again. This is not transcending suffering. It's not knowing suffering. If you want to understand suffering, you must look into the situation at hand. The teachings say that wherever a problem arises, it must be settled right there. Where suffering lies is right where non-suffering will arise. It ceases at the same place where it arises. If suffering arises, you must contemplate it right there. You don't have to run away. You should settle the issue right there. One who runs away from suffering out of fear is the most foolish person of all. He'll simply increase his stupidity endlessly. We must understand, suffering is none other than the first noble truth. Isn't that so? Are you going to look on it as something bad? Dukkha Satya, Samudaya Satya, Nirodha Satya, Magga Satya. Running away from these things isn't practicing according to the true Dhamma. When will you ever see the truth of suffering? If we keep running away from suffering, we'll never know it. Suffering is something we should recognize. If you don't observe it, when will you ever recognize it? Not being content here, you run over there. When discontent arises there, you run off again. You're always running. If that's the way you practice, you'll be racing with the devil all over the country. The Buddha taught us to run away, quote unquote, using wisdom. For instance, suppose you had stepped on a thorn or a splinter and it got embedded in your foot. As you walk, it occasionally hurts, occasionally not. Sometimes you may step on a stone or a stump and it really hurts, so you feel around in your foot, but not finding anything, you shrug it off and walk on a bit more. Eventually, you step on something else and the pain arises again. Now, this may happen many times. What is the cause of that pain? The cause is that splinter or thorn embedded in your foot. The pain is constantly near. Whenever the pain arises, you may take a look and feel around a bit, but not seeing the splinter, you let it go. After a while, it hurts again, so you take another look. When suffering arises, you must note it. Don't just shrug it off. Whenever the pain arises, that splinter is still there. Whenever the pain arises, there arises also the thought that that splinter has got to go. If you don't take it out, there will only be more pain later on. The pain keeps reoccurring again and again until the desire to take out that thorn is constantly with you. In the end, it reaches a point where you make up your mind once and for all to get that thorn out, because it hurts. Now, our effort in the practice must be like this. Wherever it hurts, wherever there's friction, we must investigate. Confront the problem head on. Take that thorn out of your foot. Just pull it out. Wherever your mind gets stuck, you must take note. As you look into it, you will know it.
See it and experience it as it is. Our practice must be unwavering and persistent. We call it viryarambha, putting forth constant effort. Whenever an unpleasant feeling arises in your foot, for example, you must remind yourself to get that thorn out and not to give up your resolve. Likewise, when suffering arises in our hearts, we must have the unwavering resolve to try to uproot the defilements, to give them up. This resolve is constantly there, unremitting. Eventually, the defilements will fall into our hands where we can finish them off. So in regard to happiness and suffering, what are we to do? If we didn't have these things, what could we use as a cause to precipitate wisdom? If there is no cause, how will the effect arise? All dhammas arise because of causes. When the result ceases, it's because the cause has ceased. This is how it is, but most of us don't really understand. People only want to run away from suffering. This sort of knowledge is short of the mark. Actually, we need to know this very world that we're living in. We don't have to run away anywhere. You should have the attitude that to stay is fine and to go is fine. Think about this carefully. And where do happiness and suffering lie? If we don't hold fast to, cling to, or fix onto anything as if it weren't there, suffering doesn't arise. Suffering arises from existence, bhava. If there is existence, then there is birth. Upadana, clinging or attachment, this is the prerequisite which creates suffering. Wherever suffering arises, look into it. Don't look too far away. Look right into the present moment. Look at your own mind and body. When suffering arises, ask, why is there suffering? Look right now. When happiness arises, ask, what is the cause of that happiness? Look, right there. Wherever these things arise, be aware. Both happiness and suffering arise from clinging. The cultivators of old saw their minds in this way. There is only arising and ceasing. There is no abiding entity. They contemplated from all angles and saw that there was nothing much to this mind. They saw nothing is stable. There's only arising and ceasing, ceasing and arising. Nothing is of any lasting substance. While walking or sitting, they saw things in this way. Wherever they looked, there was only suffering. That's all. It's just like a big iron ball which has been heated in a blast furnace. It's hot all over. If you touch the top, it's hot. Touch the sides and they're hot. It's hot all over. There isn't any place on it which is cool. Now, if we don't consider these things, we won't know anything about them. We must see clearly. Don't get born into things. Don't fall into birth. Know the workings of birth. Such thought says, oh, I can't stand that person. He does everything wrong. Those will no longer arise. Or, I really like so-and-so. These things don't arise. There remains merely the conventional worldly standards of like and dislike. But one's speech is one way, one's mind another. They are separate things. We must use the conventions of the world to communicate with each other, but inwardly we must be empty. The mind is above those things. We must bring the mind to transcendence like this. This is the abiding of the noble ones. We must all aim for this and practice accordingly. Don't get caught up in doubts. Before I started to practice, I thought to myself, the Buddhist religion is here, available for all, and yet, why do only some people practice while others don't? Or if they do practice, they do so only for a short while and then give up. Or again, those who don't give it up still don't knuckle down and do the practice. Why is this? So I resolved to myself, okay, I'll give up this body and mind for this lifetime and try to follow the teaching of the Buddha down to the last detail. I'll reach understanding in this very lifetime, because if I don't, I'll still be sunk in suffering. I'll let go of everything else and make a determined effort, no matter how much difficulty or suffering I have to endure. I'll persevere. If I don't do it, I'll just keep on doubting. Thinking like this, I got down to practice. No matter how much happiness, suffering, or difficulty I had to endure, I would do it. I looked on my whole life as if it were only one day and a night. I gave it up. I'll follow the teaching of the Buddha. I'll follow the Dhamma to understanding. Why is this world of delusion so wretched? I wanted to know. I wanted to master the teaching. And so I turned to the practice of Dhamma. How much of the worldly life do we monastics renounce? If we've gone forth for good, then it means we renounce it all.
There's nothing we don't renounce. All the things of the world that people enjoy are cast off. Sights, sounds, smells, tastes, and feelings, we throw them all away. And yet, we experience them. So Dhamma practitioners must be content with little and remain detached. Whether in regard to speech, eating, or whatever, we must be easily satisfied. Eat simply, sleep simply, live simply. Just like they say, an ordinary person is one who lives simply. The more you practice, the more you'll be able to take satisfaction in your practice. You'll see into your own heart. The Dhamma is pachatang. You must know it for yourself. To know for yourself means to practice for yourself. You can depend on a teacher only 50% of the way. Even the teaching I've given you today is completely useless in itself, even if it's worth hearing. But if you were to believe it all just because I said so, you wouldn't be using the teaching properly. If you believe me completely, you'd be foolish. To hear the teaching, see its benefit, put it into practice for yourself, see it within yourself, do it yourself, this is much more useful. You will then know the taste of Dhamma for yourself. This is why the Buddha didn't talk about the fruits of the practice in much detail, because it's something one can't convey in words. It would be like trying to describe different colors to a person blind from birth. Oh, it's so white, or it's bright yellow, for instance. You couldn't convey those colors to them. You could try, but it wouldn't serve much purpose. The Buddha brings it back down to the individual. See clearly for yourself. If you see clearly for yourself, you'll have clear proof within yourself. Whether standing, walking, sitting, or reclining, you'll be free of doubt. Even if someone were to say, your practice isn't right, it's all wrong. Still, you'd be unmoved, because you have your own proof. A practitioner of the Dhamma must be like this wherever he goes. Others can't tell you. You must know for yourself. Samadhi, right view, must be there. The practice must be like this for every one of us. To do the real practice like this for even 1 month out of 5 or 10 rains retreats would be rare. Our sense organs must be constantly working. Know content and discontent. Be aware of like and dislike. Know appearance and know transcendence. The apparent and the transcendent must be realized simultaneously. Good and evil must be seen as coexistent, arising together. This is the fruit of the Dhamma practice. So whatever is useful to yourself and to others, whatever practice benefits both yourself and others, is called following the Buddha. I've talked about this often. The things which should be done, people seem to neglect. For example, the work in the monastery, the standards of practice, and so on. I've talked about them often, and yet people don't seem to put their hearts into it. Some don't know. Some are lazy and can't be bothered. Some are simply scattered and confused. But that's a cause for wisdom to arise. If we go to places where none of these things arise, what will we see? Take food, for instance. If food doesn't have any taste, is it delicious? If a person is deaf, will he hear anything? If you don't perceive anything, will you have anything to contemplate? If there are no problems, will there be anything to solve? Think of the practice in this way. Once I went to live up north. At that time I was living with many monks, all of them elderly but newly ordained, with only 2 or 3 rains retreats. At that time I had 10 rains. Living with those old monks, I decided to perform the various duties, receiving their bowls, washing their robes, emptying their spittoons, and so on. I didn't think in terms of doing it for any particular individual. I simply maintained my practice. If others didn't do the duties, I'd do them myself. I saw it as a good opportunity for me to gain merit. It made me feel good and gave me a sense of satisfaction. On the Uposita days, I knew the required duties. I'd go and clean out the Uposita hall, set out the water for washing and drinking. The others didn't know anything about the duties. They just watched. I didn't criticize them because they didn't know. I did the duties myself, and having done them, I felt pleased with myself. I had inspiration and a lot of energy in my practice. Whenever I could do something in the monastery, whether in my own kuti or others, if it was dirty, I'd clean it up. I didn't do it for anyone in particular. I didn't do it to impress anyone. I did it to maintain a good practice. Cleaning a kuti or a dwelling place is just like cleaning rubbish out of your own mind. Now this is something all of you should bear in mind. You don't have to worry about harmony. It'll automatically be there.
Live together with Dhamma, with peace and restraint. Train your mind to be like this, and no problems will arise. If there's heavy work to be done, everybody helps out, and in no time the work is done. It gets taken care of quite easily. That's the best way. I've come across some other types, though. I used it as an opportunity to grow. For instance, living in a big monastery, the monks and novices may agree amongst themselves to wash robes on a certain day. I'd go and boil up the jackfruit wood. That's the heartwood from the jackfruit tree is boiled down, having been chopped into small chips, and the resulting color is used both to dye and wash the robes for forest monastics. Now, there'd be some monks who'd wait for someone else to boil up the jackfruit wood and then come along, wash their robes, and take them back to their kutis, hang them out, and then take a nap. They didn't have to set up the fire. They didn't have to clean up afterwards. They thought they were onto a good thing, but they were being clever. This is the height of stupidity. These people are just increasing their own stupidity because they don't do anything. They leave all the work up to others. They wait till everything is ready, then come along and make use of it. It's easy for them. This is just adding to one's foolishness. Those actions serve no useful purpose whatsoever to them. Some people think foolishly like this. They shirk their required duties and think that this is being clever. It's actually being very foolish. If we have that sort of attitude, we won't last. Therefore, whether speaking, eating, or doing anything whatsoever, reflect on yourself. You may want to live comfortably, eat comfortably, sleep comfortably, and so on, but you can't. What have we come here for? If we regularly reflect on this, we will be heedful, we won't forget, we'll be constantly alert. Being alert like this, you will put forth effort in all postures. If you don't put forth effort, things will go quite differently. Sitting, you sit like you're in the town. Walking, you walk like you're in the town. You just want to go and play around in the town with the lay people. If there is no effort in the practice, the mind will tend in that direction. You don't oppose and resist your mind. You just allow it to waft along in the wind of your moods. This is called following one's moods. Like a child. If he indulges all his wants, will he be a good child? If the parents indulge all their child's wishes, is that good? Even if they do indulge him somewhat at first, by the time he can speak, they may start to occasionally spank him because they're afraid he'll end up stupid. The training of our mind must be like this. You have to know yourself and know how to train yourself. If you don't know how to train your own mind, waiting around expecting someone else to train it for you, you'll end up in trouble. So don't think that you can't practice in this place. Practice has no limits. For the standing, walking, sitting, or lying down, you can always practice. Even while sweeping the monastery grounds or seeing a beam of sunlight, you can realize the Dhamma. But you must have sati at hand. Why so? Because you can realize the Dhamma at any time at all, in any place, if you ardently meditate. Don't be heedless. Be watchful. Be alert. While walking on alms round, all sorts of feelings arise, and it's all good Dhamma. When you get back to the monastery and are eating your food, there's plenty of good Dhamma for you to look into. If you have constant effort, all these things will be objects of contemplation. There will be wisdom. You will see the Dhamma. This is called Dhamma Vijaya, reflecting on Dhamma. It's one of the enlightenment factors. If there is sati, recollection, there will be Dhamma Vijaya as a result. These are the factors of enlightenment. If we have recollection, then we won't simply take it easy. There will also be inquiry into Dhamma. These things become factors for realizing the Dhamma. If we reach this stage, our practice will know neither day nor night. It'll continue on regardless of the time of day. There'll be nothing to taint the practice, or if there is, we will immediately know it. Let there be Dhamma Vijaya within our minds constantly, looking into Dhamma. If our practice has entered the flow, the mind will tend to be like this. It won't go off after other things. I think I'll go for a trip over there, or perhaps this other place, over in that province. That should be interesting. That's the way of the world. Not long and the practice will die. So resolve yourselves. It's not just by sitting with your eyes closed that you develop wisdom. Eyes, ears, nose, tongue, body, and mind are constantly with us. So be constantly alert. Study constantly. Seeing trees or animals can all be occasions for study. Bring it all inwards. See clearly within your own heart. If some sensation makes an impact on the heart, witness it clearly for yourself. Don't simply disregard it. Take a simple comparison. Baking bricks. Have you ever seen a brick baking oven?
They build the fire up about 2 or 3 feet in front of the oven. Then the smoke gets drawn into it. Looking at this illustration, you can more clearly understand the practice. To make a brick kiln work the right way, you have to make the fire so that all the smoke gets drawn in. None is left over. All the heat goes into the oven, and the job gets done quickly. We Dharma practitioners should experience things in this way. All our feelings should be drawn inwards, to be turned into right view. The sights we see, the sounds we hear, the odors we smell, the flavors we taste, and so on, the mind draws them all inward to be converted into right view. Those feelings thus become experiences, which gives rise to wisdom. हिंदी अनुवाद करते हैं प्रवचन का। हम सब ने भिक्षु बनने और सामने बनने का मन बनाया है ताकि हम भगवान की शिक्षा में, शासन में रह के शांति अनुभव कर सकें। लेकिन सच्ची शांति क्या है? भगवान ने कहा कि बहुत दूर नहीं है, ये हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसको बार बार अपेक्षा करते रहते हैं। लोगों के अपने विचार हैं शांति किस तरह से मिलती है, वो सोचते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं होता उसके बारे में। अभी अपना ध्येय प्राप्त नहीं किया है। ऐसे ही है जैसे हम अपने घर से कहीं जाने के लिए निकलें, गाड़ी में या नदी में या नाव में, लेकिन अभी भी हम घर पहुंचे नहीं हैं। और जब तक हम घर नहीं पहुंचते तब तक संतोष नहीं होता और हमें लगता है कि कुछ काम बचा हुआ है जो अभी हमें करना है। और फिर हम सब जगह घूमते फिरते हैं शांति के लिए, मुक्ति के लिए। आप सभी भिक्षु और सामने भी यहाँ इसलिए आए हैं। और जब मैं छोटा था मैं भी इसलिए सारे संसार मैं सब जगह घूमता रहता था शांति मिलने के लिए। यहाँ शांति नहीं मिली, फिर कहीं और चले गए, लेकिन कहीं भी संतोष नहीं मिला। जंगलों में, दूसरे अन्य अन्य टीचर्स के पास धम्मा सुनने में कहीं संतोष नहीं था। क्यों नहीं था ऐसा? क्योंकि मैं शांति ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ के कि स्थान शांतिपूर्ण हो, जहाँ कोई देखने को ना हो, सुनने को ना हो, इंद्रियों में कोई भी स्पर्श ना हो। तो इस तरह से सोचता था कि ऐसे रहूंगा तो अपने आप शांति आ जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसे स्थान पर रहें जहाँ कुछ भी इंद्रियों पे स्पर्श ना हो तो प्रज्ञा कैसे जागेगी? हम किसी चीज के बारे में मालूम जानकारी नहीं होगी तो प्रज्ञा कैसे जागेगी? अगर हम चीजें देखेंगे नहीं, नाक सूंघेंगे नहीं इत्यादि, तो ऐसे हो गया जैसे कोई अंधा बहरा आदमी है जो कुछ पैरालाइज हो गया, उसे कुछ मालूम ही नहीं है। जब मैं युवक था और साधना करनी शुरू की, मैं साधना में बैठता था और जो आवाज़ आती थी तो मुझे वो डिस्टर्ब करती थी। मैं सोचता था कि क्या करूं मैं अपने मन को शांत करने के लिए। तो मैंने कुछ वैक्स ले ली थी और अपने कानों में भर दिया उसको ताकि मैं कुछ सुन न सकूं। लेकिन मुझे लगा शायद इससे शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि दुख जो अशांति जो थी वो तो मन में जागती थी। दूसरी तरह से कहें तो आप चाहे कहीं भी चले जाए रहने के लिए, आप यही चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी साधना में हमको डिस्टर्ब ना करे। हमको अगर सफाई करनी है, ग्राउंड की झाड़ू लगाना है, हम सोचते हैं कि वो हमें ना करना पड़े, हम तो चुपचाप शांति से बैठे रहें। और टीचर कहता है कि काम करो तो हम करते हैं, बेमन से उसको काम करते हैं। मैंने कई बार एक ऐसे अपने शिष्य की बात सामने लाई है इसको समझने के लिए कि वो सचमुच में त्याग करने पे और शांति पाने के लिए बहुत उत्सुक था।
तो जब से वो यहाँ आया था तब से वो कुछ करना नहीं चाहता था। एक ऐसी स्थिति आई कि उसकी जो कुटी थी उसकी आधी छत उड़ भी गई, लेकिन मैं उसको भी ठीक करना नहीं चाहता, क्योंकि ये तो बाहर की चीज़ है। जब बारिश आती थी तो वो दूसरी तरफ चला जाता था, जब धूप आती थी तो इस तरफ चला जाता था। उसका उद्देश्य ही बना रखा था कि मन को शांत करना है। एक दिन मैं हाँ जा रहा था तो मैंने देखा, यार किसकी कुटी है जो आधी टूटी हुई है। किसी ने बताया कौन है, तो मैंने कहा बड़ी अजीब सी बात है। तो फिर मैंने उसे बुला के बात की, समझाया कि भगवान की शिक्षा में हमारे को सेनासन वाट्य की बात सिखाई जाती है। हमारा एक रहने का स्थान है और हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। लेटिंग गो का, त्याग का ये मतलब नहीं है कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को त्याग कर दें, ये तो मूर्खता का काम है। तो जब धूप आती है तुम इस तरफ आ जाते हो और बारिश आती है तो उस तरफ चले जाते हो, वहां पे लेट गो क्यों नहीं करते? तो जब मैंने काफी लंबा प्रवचन दिया इस बात पे, तो कहने लगा, अरे लुंगपो, और आप कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कहते हो त्याग करो, मैं त्याग करता हूँ सब कुछ, मेरी छत भी उड़ गई, मैंने उसको भी त्याग कर दिया, फिर कहते हो ये ठीक नहीं है। अब मुझे बता दो मैं क्या करूँ? तो अजान कहते हैं कि ऐसे ही लोग होते हैं, इतने मूर्ख भी हो सकते हैं। अगर हमारी इंद्रियां न काम न करें, इंद्रियों के स्पर्श ना हो, तो हमारी प्रज्ञा कैसे जागेगी? कोई धर्म नहीं जागेगा। हम कैसे जानेंगे कि हमारा मन किस हद तक उनको ठीक से समझ पा रहा है? अगर हम ये सोचते हैं कि शांति तब मिलेगी जब हमारी इंद्रियों में कोई भी स्पर्श नहीं होगा, तो क्या समझदारी की बात है? क्या हम बाह्य आवाज को अपनी शांति के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? किसी स्थान के लिए अपने शांति के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? विचार करने योग्य बात है। इस तरह से अगर हम सोचते हैं कि हमारा जो दुख है वो सिर्फ इंद्रियों के कारण आता है, तो चलो फिर तो हम अंधे ही हो जाते हैं, कुछ देखना नहीं पड़ेगा, बहरे हो जाते हैं। लेकिन ये सब सोचना गलत है। मैं भी शुरू में ही ऐसे सोचता था, लेकिन समझ में आ गया कि सब गलत है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अंधे और बहरे सभी लोग मुक्त हो जाते। वास्तव में तो प्रज्ञा, जो विजडम है, वो इन्हीं इंद्रियों के स्पर्श के कारण ही जागेगी। हम समझेंगे कि स्पर्श से क्या होता है। भगवान ने ये जरूर सिखाया था कि इंद्रियों का संवर करो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि इंद्रियों को इस्तेमाल ही नहीं करो। तो जैसे भगवान अजान फिर असजित थेरा की उदाहरण देते हैं कि जब सारे पुत्र ने उनको देखा, वो जब भिक्षाटन पे जा रहे थे, तो उनको लगा कि कितने संयमित होकर चल रहे हैं, ना धीरे ना तेज, और कैसा उनका हवा मंडल है। तो बहुत उनसे प्रेरित हुए और उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं श्रवण हूँ। आपके आचार्य कौन है? भगवान वनरेबल गौतम मेरे आचार्य हैं। तो क्या शिक्षा देते हैं? तो ये शिक्षा देते हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो कंडीशंस के कारण उपजती हैं, और जब कंडीशन समाप्त हो जाए तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। तो केवल इतना सा समझाने पे कारण और उसके इफेक्ट को समझने से ही सारे पुत्र जी का चित्त स्पष्ट हो कि मुक्ति का पहला स्रोत उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो उस समय सारे पुत्र के आंखें, नाक, कान सब ठीक काम कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो देख नहीं रहे थे या सुन नहीं रहे थे। और उस समय ऐसी स्थिति में भी उन्होंने इतनी प्रज्ञा जगाई उस बात को सुन के कि वो मुक्ति के स्रोत में पड़ गए। यही सत्य है। ऐसे ही हमको साधना की और करने की, हमको समझने की आवश्यकता है। हम भिक्षु बने हैं तो हमें हर चीज को अपनी साधना बनाना चाहिए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। चाहे हम किसी को हम कई बार जो हमारे साथी भिक्षु हैं, कोई किसी को हम पसंद करते हैं, किसी को नहीं पसंद करते। हम चाहते हैं कि जो जिसको हम नहीं पसंद करते उसके साथ रहना नहीं चाहते, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। इस तरह से हम धर्म नहीं सीख सकते। भगवान चाहते थे कि हम सब तरह की चीजें अनुभव करें, क्योंकि तभी हम लोक विदु बन सकते हैं, संसार को ठीक से देख सकते हैं और जान सकते हैं। अगर संसार को हम ठीक से जानेंगे नहीं तो हम कहीं जा नहीं सकते।
जो पुराने आर्य लोग थे, भगवान बुद्ध थे, वो सब संसार में ही रहे और संसार में जो भ्रमित लोग थे उन्हीं के बीच में रहे और उनके बीच में रहते हुए उन्होंने सत्य को प्राप्त किया। वो कहीं दूर भाग के नहीं गए थे। तो इसलिए भगवान ने हमको सिखाया कि इंद्रियों को समझना चाहिए। जब हमारी इंद्रियां अपने विषयों से स्पर्श करती हैं तो क्या होता है उसको समझना चाहिए। जैसे विज्ञान जागता है उसको समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम समझेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है और हम या तो उनके प्रति राग जगाएंगे या द्वेष जगाएंगे। कई बार जब साधकों को ये बात स्पष्ट नहीं होती तो कभी वो बौद्ध विहार में ठहरते हैं, फिर सोचते हैं जंगल चले जाते हैं, फिर सोचते हैं पहाड़ों में चले जाएं, फिर कहेंगे दूतंगा पिलग्रिमेज कर लें। तो इस तरह का एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे आदमी अंततः परेशान हो जाता है। और वो परेशानी जो है वो निवृत्ता नहीं है, वो बोर्डम है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो अधिकतर लोग डिसरोब हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे बस का नहीं है, साधना हमारे बस की नहीं है, और चले जाते हैं। अच्छा, एक और उदाहरण उन्होंने लिया एक भिक्षु का, जो कि कहता है जैसी भी परिस्थिति होगी मैं उसमें रहूंगा, भागूंगा नहीं। वो अपने ख्याल रखना है, अपनी परिस्थितियों का ख्याल रखता है, जो भी परेशानियां आती है उनको समझता है। जैसे कि किसी बिहार के जो एबट होते हैं उनको कितनी परेशानियां आती हैं, निरंतरता से लोग ये प्रश्न, ये कठिनाई, इसको सॉल्व करना। और अगर वो जरा सा आराम भी करने रुक जाए तो लोग फिर जगा देंगे, अच्छा ये परेशानी आ गई है। और अगर आप जो एबर्ट हो, समझदार होते हैं, तो उस परिस्थिति को अपने साधना के रूप में लेते हैं और कुशलता डेवलप करते हैं अपने बारे में और दूसरों को किस तरह से हैंडल करना है उसके बारे में। तो जो इंद्रियों का स्पर्श है वो हमारे प्रज्ञा का कारण बन सकता है, हमको ठीक से जीना सिखा सकता है। और जब भी इंद्रियों के स्पर्श से कहीं दुख हो, परेशानी हो, तो हमको सोचना चाहिए कौन परेशान हो रहा है, ये दुख क्यों जागा है, इस दुख का कारण क्या है। क्योंकि भगवान ने समझाया है कि दुख से निकलने का तरीका है कि हमको दुख को समझना है, उससे भागना नहीं है। अगर आप दुख को समझेंगे नहीं तो साधना के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि यही पहला आर्य सत्य भगवान ने समझाया कि दुख है, दुख सच, और उसको समझना चाहिए। और फिर बाकी समुदय सत्य, निरोध सत्य, मग्ग सत्य भगवान ने समझाए। परिस्थितियों से भागना धर्म का पालन करना नहीं है। बस भगवान ने सिखाया कि हाँ, हमें दुख से दूर रहना है प्रज्ञा के माध्यम से, ना कि परिस्थितियों से भागना है। वो ऐसी बात है जैसे कि मान लो आप जंगल में चल रहे हैं और एक कांटा आपके पाँव में चला गया, आपने देखा, आपको दिखा नहीं, आप चले जा रहे हैं, फिर दोबारा दर्द हुई, फिर आपने देखा, दिखा नहीं, आप चलते रहते हैं और बीच बीच में दर्द शुरू हो जाती है। तो आपको जब ये बहुत बार होती है तो आप सोचते हैं क्यों हो रहा है दर्द, और फिर आप देखते हैं अरे कांटा चुभा हुआ है पाँव में, और फिर कांटे को निकाल देते हैं, तो फिर दर्द होना बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब दुख होता है, अगर आप दुख का कारण नहीं देखेंगे तो दुख बनता बढ़ता रहेगा, बार बार दुख आता रहेगा। उसका कारण देखा और कारण आपने निकाल दिया तो दुख समाप्त हो जाएगा। तो हमारी साधना इसी तरह से निरंतरता से चलनी चाहिए। वीर्य हमारा पुष्ट होना चाहिए। जब भी अप्रिय परिस्थिति आए हमको याद रखना चाहिए, हमारा मन बेचैन होने लगे कि हाँ कोई कांटा चुभ गया है, मुझे उसको निकालना है। तो हमारे कोई विकार जागा है, उसको हटाने का काम करना है। तो अगर सुख और दुख नहीं होते तो हम कैसे अपनी प्रज्ञा बढ़ा सकेंगे, क्योंकि यही तो कारण है हमारे इस प्रज्ञा जागने के। अगर हम जागेंगे नहीं तो उनका निरोध कैसे समझ पाएंगे। दुख से भागने से काम नहीं चलेगा।
वो साधना नहीं ठीक। अगर हम चीज़ों के साथ चिपकाव नहीं करेंगे तो दुख नहीं जागेगा। ये हम अपने अनुभव से जानते हैं, जहाँ जहाँ उपादान होता है वहीं पे दुख जागता है। तो जब भी दुख जागे, देखो, समझो क्या कारण है और वहीं पे देखो, तो स्पष्ट आ जाएगा कि इस कारण से दुख आता है, इस कारण से सुख आता है। सभी हर सब काल के जो साधक थे उन्होंने मन को इसी तरह से देखा है और समझा कि मन के अंदर कोई आत्मा नहीं है, कोई सार नहीं है। चीजें उपजती हैं, समाप्त हो जाती हैं और उसमें कोई भी अबाइडिंग एसेंस नहीं है। चाहे हम बैठे हों, चाहे चल रहे हों, हर तरफ जब भी दुख आए हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हर परिस्थिति दुख ही है। जो सुख भी है वो थोड़े समय का और फिर चला जाता है, दुख में बदल जाता है। ऐसा ही है जैसे एक लोहे का बॉल है जो गर्म किया गया है भट्टी में, अब आप उसको कहीं भी छू लीजिए वो गर्म ही रहेगा। अगर हम इस प्रकार चीज़ों को ठीक से समझेंगे नहीं तो धर्म के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सांसारिक जो संसार है उसकी एक अपनी भासमान सत्य है और उसकी कन्वेंशनल रियलिटी है जिसमें कुछ प्रिय हैं, कुछ अप्रिय चीजें हैं, वो अलग बातें हैं। वो संसार के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमको उस तरह की कन्वेंशंस को फॉलो करना पड़ता है, बट अपने भीतर हमको उनको सार ही नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारा मन इन सब से ऊपर है और हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ सकते हैं, जैसे कि बाकी आर्य लोग ऊपर उठते हैं। जब मैंने साधना शुरू की थी तब मैंने ये सोचा अपने से कि भगवान की शिक्षा उपलब्ध है, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों लोग कभी साधना थोड़ी देर करते हैं फिर छोड़ देते हैं। मैंने सोचा मैं अपना सारा तन मन धन सारा जीवन इसी में लगा दूंगा, भगवान की शिक्षा को पूरी गहराई से समझने में, जब तक कि मुझे मुक्ति न मिल जाए, सब पूरी बात समझ ना आ जाए। इस तरह से जब मैंने शुरू किया तो खूब गंभीरता से साधना कर पाया, चाहे परिस्थिति प्रिय हो अप्रिय हो, दुख हो सुख हो, साधना में छोड़ी नहीं, रात और दिन साधना करता रहा। हम सभी भिक्षु लोग कितने संसारिक सुखों को त्याग के आते हैं और फिर इसलिए आवश्यक है कि आप संतोष को अपने बढ़ाएं, जो परिस्थिति है उसी में संतोष रखें, खाने में, बोलने में, रहने में, सादा खाएं, सादा जिए और सादा सोएं। धम्म जो है वो पश्चात्तम है, हमको हर एक को अपने अंदर जानना है। टीचर की आवश्यकता बहुत शुरू शुरू में रहती है, ये समझ लीजिए आधे रास्ते पे रहती है, उसके बाद तो सब कुछ आपको अपने आप ही करना है। मैं भी जो आपको सिखा रहा हूँ आप उसको पूरी तरह बगैर सोचे समझे विश्वास न करें। इसीलिए भगवान ने साधना के जो फल हैं उनके बारे में चर्चा नहीं की, क्योंकि वो अपने आप हमको अनुभव करने हैं। एक साधक को सम्मा दृष्टि की बहुत डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है, ताकि हम अपने को ठीक से समझ सकें। अगर हम सचमुच में गंभीरता से साधना करें, एक दो महीने भी ठीक से साधना कर लें तो बहुत लाभ हो जाता है। हालांकि बहुत रेयर हो गया है आजकल। हमारे इंद्रियां निरंतर काम करती रहती हैं, उन पर स्पर्श होता रहता है, प्रिय अप्रिय परिस्थिति जागती रहती है, हम उनको समझते रहते हैं और उससे ऊपर उठते रहते हैं। तो इस धर्म की अभ्यास का एक फल है। तो इसलिए जो मोनेस्ट्री में काम है, दूसरी चीजें हैं का जो एक्सटर्नल लगते हैं आपको, वो भी साधना का
एक आलम्बन बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसी जगह जाएं जहाँ कुछ भी चीज़ स्पर्श ना हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि राग कहाँ जागता है, द्वेष कहाँ जागता है। तो अपनी बात बता रहे हैं कि मैं एक जगह बहुत पहले भिक्षुओं के साथ रहने गया था, जहाँ पे कि काफ़ी वयोवृद्ध वृक्ष थे जो पहले बहुत हाल ही में भिक्षु बने थे, और मैं थोड़ा, मुझे 10 साल हो गए थे भिक्षु बने हुए, क्योंकि वृद्ध लोग थे तो मैंने इनकी सब सेवा करना शुरू किया। उनके बाउल्स लेता था, धोता था उनके कपड़े, स्पिटून्स को साफ करता था। वो किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको तरह समझा। कई लोग अगर ड्यूटी नहीं करते तो सोचते हैं कि हम बड़े चालाक हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता था। और जब वसत का दिन आता था तो उसके समय जो काम करने हैं, सफाई करनी, हॉल की, पानी वगैरह रखना, वो सब मैं करता था, ताकि मैं अपने से प्रसन्न रहूं, और इससे मेरे को प्रेरणा मिलती थी, वीर्य जागता था। और ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो अपने आप ही आपस में हार्मनी बनी रहेगी। मैं हालांकि दूसरे तरह के लोगों को भी देखता हूँ, और जैसे हम बड़ी मॉनेस्ट्री में रह रहे हैं तो भिक्षु और सामने रहते हैं, वो कहते हैं अच्छा इस दिन हम कपड़े धोएंगे, तो अब जो कपड़े को धोने के लिए, रंगने के लिए जो जैक फ्रूट की लकड़ी होती है उसको उबालना होता है, तो मैं जाके वो उबाल देता था। लेकिन कई भिक्षु ऐसे भी मैंने देखे जो वेट करते रहते कि दूसरा आदमी आए और वो काम करे, और फिर वो अपने फटाफट आएंगे, रोब्स डालेंगे और उसमें उसमें उसको धो लेंगे। तो सोचते थे कि वो बहुत चालाक हैं, बड़े क्लेवर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये मूर्खता की हद है। क्योंकि वो अपना काम करके चले गए, ना ही उन्होंने कहा उसको रंग को बनाने में मदद की, ना ही उसके बाद उसको साफ करने में मदद की। तो ये उनकी समझदारी नहीं, मूर्खता है। तो इसलिए हर समय बोलते हुए, खाते हुए, कुछ भी करते हुए निरंतर आपको चिंतन करते रहना चाहिए, जानना चाहिए, अपने भीतर जानना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सजग, जितना भी हम सजग रहेंगे उतना सती बनी रहेगी, तो हमारी साधना निरंतरता से होती रहेगी। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे साधना की तरफ तो मन इधर उधर भटकता ही रहेगा। तो जैसे एक छोटे बच्चे को अगर उसकी हर बात मानेंगे तो वो बिगड़ जाता है, उसी तरह से अपने भी मन के मूड की, हर मूड के हिसाब से काम करेंगे तो मन हमारा अपने वश में नहीं रहेगा, बिगड़ ही जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस स्थान पे हम साधना नहीं कर सकते, हमें वो किसी और स्थान पे साधना करनी चाहिए। मुख्य बात यह है कि हम सजग रहें, सतीवान रहें, और जो जो परिस्थिति आती है, चाहे आर्म्स राउंड पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हम रिफ्लेक्ट करते रहें क्या परिस्थिति है, और उसको समझदारी से समझते रहें। इसी को धम्म विजय कहते हैं, जो कि एक बुद्धि का अंग है। जब सती होती है तो धम्म विजय उसका परिणाम है, और उससे हम धर्म की बातों को, जो भी परिस्थिति आई है, उसको प्रज्ञा डेवलप करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इस तरह की परिस्थिति पहुंच जाती है साधना की, तो आप रात और दिन निरंतरता से अपने आप साधना करने लगते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, आपका मन करेगा कि इन्वेस्टिगेट करके देखें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसलिए आपको आंख बंद करके बैठने से विजडम मिलेगी, ऐसे बात ठीक नहीं, सोचना विचार ठीक नहीं है। सारी इंद्रियां सजग होनी चाहिए, और जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति धम्म विचय करते रहना चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे कि जो ईंटें बनाते हैं, उनको गर्म करते हैं, तो उनको पहले जो अपनी फर्नेस होती है उसको 1-2 फुट ऊंचा तक पूरा गर्म करते हैं, ताकि सारा धुआं अंदर आ जाए, और फिर उससे सारी लकड़ियाँ, जो सारी ईंटें, जो कच्ची मिट्टी है, वो ईंटों में बदल जाए। हमारे साधकों को भी कुछ इसी तरह से करना चाहिए, ताकि सब कुछ जो बाहर से इम्पिंजमेंट हो रहा है वो हमारे भीतर आता है, उसको हम देखें, उसको समझें, और उसको सम्यक दृष्टि में कन्वर्ट कर सकें। तो इस प्रकार से हमारी प्रज्ञा डेवलप होगी।
1-2 मिनट शांत कर लेते हैं मन को, बोलता रहा इतनी देर, और फिर पुण्यानुसति का अभ्यास करेंगे। पुण्यानुसति का भी वही उद्देश्य है, चित्त को नेगेटिविटी से निकाल के अपलिफ्ट करना। जब विषम परिस्थितियों में मन डोलने लगता है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो इसलिए पुण्यानुसति बहुत महत्वपूर्ण। खासतौर पे कहा जाता है कि जब लगे कि मृत्यु पास आ रही है तो पुण्यानुसति बहुत लाभदायक। इस तरह जब बीमारी में बहुत बेचैनी हो रही हो, लगे कि पता नहीं बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, भय, आशंका, अगला जन्म होगा कैसा होगा, मरने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी कहा जाता है कि पुण्यानुसति की जाए तो बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि वो एक तरह से इंश्योर करता है कि अगला जन्म अच्छा ही होगा। इसलिए पुण्यानुसति का बहुत महत्व। और आजकल के वातावरण में जब मालूम नहीं कब हमारी बारी आ जाए, तो पुण्यानुसति का अभ्यास करना काफी समीचीन लगता है। तो पुण्यानुसति के बेसिकली 2 भाग कहे जाते हैं, शीलानुसति और त्यागानुसति। त्याग जो हमने किए हैं और जो शीलों का पालन किया है। तो कई बार हम कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ शीलों का विवरण देता हूँ और हम अपने मन में धम्म विजय कर सकते हैं, देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे शील सचमुच में बहुत पुष्ट हैं, और मन में मोद जगा सकते हैं, प्रसन्नता जगा सकते हैं कि देखिए मैंने किसी प्राणी की हत्या नहीं की, किसी की चोरी नहीं की इत्यादि। तो उससे मन में प्रसन्नता जागती है कि हमने धर्मानुकूल जीवन जिया है। तो करते हैं एक एक करके, सभी शीलों को याद करते हुए। पानातिपाता वैरमणि, प्राणियों की हत्या से दूर रहे हम, जानबूझकर कभी किसी मच्छर को भी नहीं मारा। तो संतोष कर सकते हैं इस बात पे। अदिन्ना दाना वैरमणि, कोई चोरी नहीं की, ऐसी चीज नहीं ली जिसपे हमारा राइटफुल हक बनता हो, जो हमें ना दी गई हो। अपने जीवन का सिंहावलोकन करके हम देख सकते हैं कि क्या ये बात सत्य है। तुरंत याद आ जाएगा, अगर कहीं कमी होगी तो तुरंत याद आ जाएगी। तो फिर हम उसको, कमी को पूरा करने का संकल्प करते हैं। और लगता है कि कुछ गलती हुई है तो किसी बड़े के पास जाके उसको प्रकट कर लेते हैं, ताकि मन में रिमोर्स ना रहे, पश्चाताप ना रहे।
कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि। कभी हमने कोई व्यभिचार नहीं किया, अपने स्पाउस के सिवा किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, मूसावादा वीरमणि, पिशनाय वाचा वीरमणि, परसाय वाचा वीरमणि, संपलापा वीरमणि। झूठ नहीं बोलना, किसी की चुगली नहीं करते, निंदा नहीं की उसके पीठ पीछे, किसी को दुख देने के लिए कड़वी बात नहीं कही, और व्यर्थ निरर्थक बातों में समय नहीं गवाया। तो हम अपने भीतर झांक के देख सकते हैं किस हद तक ये शील हमारा पुष्ट रहा, और उत्तरोत्तर उसकी पुष्टता में वृद्धि हो रही है या अवृद्धि हो रही है। और फिर अंतिम, सुरा मेरा ये मज्ज प्रमादठाना वीरमणि। कोई नशे का पदार्थ हमने, मादक पदार्थ इस्तेमाल नहीं किए जिससे कि मन प्रमाद में चला जाए, और ऐसे स्थान जहाँ जाने से प्रमाद बढ़ता है, जुए के खेल इत्यादि, वहाँ नहीं गए। तो इस प्रकार से शीलों का अवलोकन करके देखते हैं क्या हमारे शील काफी हद तक पुष्ट रहे हैं, और संकल्प करते हैं कि और पुष्ट करेंगे जहाँ थोड़ी बहुत कमी है। लेकिन जनरली संतोष होता है, तो संतोष से मन जो है प्रसन्न होता है, अपलिफ्ट होता है, नेगेटिविटी से दूर आता है। और इसी प्रकार ध्यानानुसति अपने त्याग जो हमने किए हैं, जो दान दिए हैं, वस्तुओं का त्याग, धन का त्याग, समय का, अपने एफर्ट का दान, जो भी हमने दान दिया है उसको ध्यानानुसति में सम्मिलित किया जाता है। तो हम सब ने विभिन्न प्रकार के दान दिए हैं, हमें मालूम है, तो उसको याद करके कोई अहम नहीं पुष्ट कर रहे, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि दान देना तभी संभव हो पाता है जब सभी लोग आसपास की हमारी सहायता करते हैं। तो दान दे पाए ऐसी परिस्थितियां बनी, उसके लिए सभी के प्रति कृतज्ञता और मन में प्रसन्नता कि ऐसा हो पाया। चाहे गरीबों को दान दिया, चाहे बीमारों को दिया, चाहे डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन को दिया, और चाहे भिक्षुओं को दिया, जो सबसे उत्तम दान। भिक्षुओं की 4 रिक्विजिट्स के लिए दान दे पाए। सब दानम जनाति, भगवान का समझाते हैं, धम्म दानम सब दानम जनाति। तो धम्म का दान देने में हमने सहायता की, धर्म सेवा की विभिन्न प्रकार से,
उसको याद करके प्रसन्नता जागती है। भिक्षु आते हैं, हम उनको यहाँ शिक्षा देने में मदद करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, धर्म सेवा देते हैं, भोजन का दान देते हैं, चीवर का दान करते हैं, दवाइयों का दान करते हैं, उनके यहाँ रहने के लिए सुविधा बनाते हैं। तो सब हमारे पुण्य के खाते में जाता है और वो करते समय इतनी प्रसन्नता जागती है। और हम सब ने संकल्प भी किया हुआ है कि निवास का दान भी देंगे, एक मोनेस्ट्री बनाएंगे। तो वो संकल्प भी हम अलाइव रखते हैं। एक छंद है, धम्म छंद। तो इस प्रकार से अपने पुण्यों को याद करके मन में प्रसन्नता जागती है। अभी भी थोड़ी देर में भी करने से आपको अवश्य लगता होगा कि अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ये पुण्य हम उसको पर्सनली लेके अहम का साधन न बने, इसलिए उनका वितरण करना ही बहुत आवश्यक। तो आइए वो वितरण की जो वर्सेस हैं उनको भी चैंट करते हैं। हिंदी चैंटिंग बुक में 28 पेज पे है पाली में, तो मैं पाली में पढ़ता हूँ। काफी सिंपल है। इमिना पुण्य कम्मेन उपध्याया गुणोत्तरा आचर्य उपकारा च माता पिता च ज्ञातका सूर्यो चंद्रमा राजा गुणवंता नरापि च ब्रह्ममारा च इंदा च लोकपाला च देवता यमो मित्ता मनुस्सा च मज्जता वेरिकापि च सर्वे सत्ता सुखी होन्तु पुण्यानि भक्तानि मे सुखं च त्रिविधं देन्तु क्षिप्तं पापेथवो मतम् इमिना पुण्यकम्मेन इमिना उद्दिश्येन च क्षिप्ताहं सुलभे चैव तह्नुपादानच्छेदनं ये सन्ताने हीना धम्मा यावन्निब्बानतो ममं न सन्तु सर्वदा एव यत्थ जातो भवे भवे उजुचित्तं सतीपन्या सल्लेखो वीर्यं हिना मारा लभन्तु नौकासं गातुं च वीर्येषु मे बुद्धादिपवरो नाथो धम्मो नाथो वरुत्तमो नाथो पच्चेकबुद्धो च संघो नाथो तरो ममं तेषोत्तमनुभावेन मारोकासं लभन्तु माम्। तुमने पुण्य समर्पित किए अपने उपाध्याय, अपने टीचर्स के प्रति, आचार्य के प्रति, माता पिता के प्रति, संबंधियों के प्रति, ब्रह्मा मार इंद्र सूर्य चंद्रमा देवता मनुष्य सभी के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति, कि हमारे पुण्यों के वितरण से वे सभी सुखी हों। आजकल की परिस्थिति में विशेष तौर से आए हम सब जो
डॉक्टर लोग, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ, पुलिस और अन्य एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोग, उन सबको भी खास तौर पे उनके प्रति पुण्य समर्पित करें, क्योंकि इतनी महामारी में, इतनी विषम परिस्थिति में वे हम सबका सपोर्ट कर रहे हैं, सबको सहायता कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादि साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि।